Question number 1. If alpha and beta are zeros of polynomial fx is equal to 2x square minus 4x plus 5, then find the value of alpha square plus beta square. The polynomial given to you is 2x square minus 4x plus 5. Find the value of alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to minus of minus 4 upon 2 is equal to 4 upon 2. So the value will be 2. Alpha into beta is equal to 5 upon 2. Now we have to calculate alpha square plus beta square. So we can use the identity alpha plus beta whole square, which is equal to alpha square plus 2 alpha beta plus beta square. Alpha plus beta square is equal to 2 square. 2 square is equal to alpha square plus beta square plus 2 into 5 upon 2. 2 से 2 cancel हो गए. 4 is equal to alpha square plus beta square plus 5. Alpha square plus beta square is equal to 4 minus 5 and minus 1 is your answer. If alpha beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k. अब इस क्वेश्चन में alpha minus beta is given to you, alpha plus beta we can find. तो पहले polynomial लिखते हैं x square minus 5x plus k. Alpha minus beta is equal to 1. Alpha plus beta की वैल्यू क्या होगी 5 upon 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है ना माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास, बी इज माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5. ये किसके बराबर हो जाएगा 5. नाउ बीटा विल गेट कैंसिल, बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6. अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. अल्फा की वैल्यू आ गई 3. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसी में भी रख दो. 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, के की वैल्यू निकालनी है यहाँ. तो इसमें हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए. इस इक्वेशन के लिए अपने पास सी की वैल्यू क्या है के. अल्फा इंटू बीटा विल बी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के. के 1, ए की वैल्यू क्या है 1, के डिवाइडेड बाय 1. सो के की वैल्यू कितनी हो गई 6. This is the third question. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus tx plus 1 minus c, show that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c. इसमें सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख लेंगे. a की वैल्यू कितनी है, a is equal to 1. b की वैल्यू क्या आएगी p. इसको खोलेंगे इक्वेशन को, x square minus px minus p minus c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी minus p minus c. Now find out the value of alpha plus beta is equal to minus b upon a minus b is minus p. b is minus p. So minus of minus p upon 1 is equal to p. Alpha plus beta की वैल्यू आ गई p. Alpha into beta is equal to minus p minus c. Now put these values into alpha plus 1 and beta plus 1. इसको पहले सॉल्व कर लेंगे. alpha beta plus alpha plus beta plus 1. Alpha beta is minus p minus c plus p plus 1. Plus p minus p cancel is equal to 1 minus c. Hence proved. Find the value of k such that the quadratic polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k plus 1 has the sum of the zeros, as sum of the zeros is half of the product. That means alpha plus beta is equal to alpha beta by 2. The value for alpha plus beta is equal to k plus 6 and the value for alpha beta is equal to 2k plus 1. Alpha plus beta, put the values k plus 6 is equal to 2k plus 1 divided by 2. Solve this. k plus 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम और इधर ये हो जाएगा 2 into 2k plus 1. कर दो फटाफट. 2k plus 12 is equal to 4k plus 2
12 minus 2 is equal to 4k minus 2k. 10 is equal to 2k. K is equal to 10 by 2 is equal to 5. Find the value of k so that the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 14 are in the ratio 7 is to x. So let the zeros are 7x and 6x. Sum of zeros will be equal to 7x plus 6x is equal to minus of minus k by 3 is equal to k by 3. And the product of the zeros, that is 7x into 6x, is equal to 14 upon 3. 42x square is equal to 14 upon 3. X square is equal to 14. 3 into 42. X की वैल्यू कितनी आ गई? 1 upon 9, root 1 upon 9. That is equal to 1 upon 3. Now substitute this value of x in this equation. इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे 8 9 10 11 12 13 13x is equal to k upon 3. 13 into 1 upon 3 is equal to k upon 3. k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 into 3 upon 3. The answer is 30. I hope you liked this video, and for such more kind of videos with the important questions, please like, share and subscribe this channel.